So, students, last time we had discussed about some points of cell. We have discussed the type of cells, differentiated cells, undifferentiated cells, and तीसरा कौन सा था? De-differentiated cells. Now tell me one question. एक क्वेश्चन का आंसर बताइए. Which type of cells helps in forming plantlets in tissue culture from a small fragment of leaf? हाँ जी अतिभा, आप बताओ बेटा, ये आपके लिए क्वेश्चन. 3 टाइप के सेल्स हमने किए थे, स्पेशलाइज्ड सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और तीसरे जो है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. कौन से सेल्स है जो पूरा प्लांट बना देंगे फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लीफ इन टिश्यू कल्चर मीडियम? अनस्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड सेल्स कैसे काम करेंगे बेटा? अनस्पेशलाइज्ड नहीं, अनस्पेशलाइज्ड वो कैसे? जो लीफ के सेल्स है, मुझे आपने हर का आंसर देना, मुझे नहीं पता. जो लीफ के सेल्स है वो तो स्पेशलाइज्ड है ना? दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑल. ठीक है, वो कैसे जो है छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाएंगे? यस कृषा, आप बताओ बेटा. गुंजन, यू टेल मी. वो अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी एक तरीके से, और इसको वी कैन कंसिडर एज रिप्रोडक्शन, और इसलिए ये अनडिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे. अनडिफरेंशिएट, या हम यहाँ पे आंसर अगर सिंगल वर्ड भी हो तो बेटा अतिभा ध्यान दो बच्चे कि यहाँ पे जो लीफ सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स है. दे बिकम अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. तो अगर सिंगल वर्ड में आंसर देना है वी विल से डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. This is de-differentiated cells which are formed from the differentiated cells of the leaf. Is it okay? ठीक है जी, समझ में आई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेकेंड. The type of cells in blastocyst stage of early embryo of humans which divide and later form different types of cells are dash. यहाँ वो सेल्स जो डिवाइड करके बहुत सारी तरह के सेल्स बनाते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं? हाँ जी, who will tell me? शिवांशी. यस शिवांशी, बोलो जल्दी से आंसर बोलो बेटा. ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है जहां पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और जो न्यू सेल्स है वो डिफरेंट, कोई मसल सेल्स बना रहा है, कोई ब्लड सेल्स बना रहा है, कोई नर्व सेल्स बना रहा है, कोई बोन सेल्स बना रहा है, इस तरह से बना रहे हैं.
तो यहाँ बताइए कि ये सेल्स कौन से हैं। 3 टाइप के सेल्स मैंने बताए हैं, डिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल और तीसरे है डी डिफरेंशिएटेड सेल। मैम मेरे ख्याल से तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं बेटा, है ना, से विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड या फिर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। नेक्स्ट है, लिखते जाना कॉपी पे, सेल्स present in shoot apex and root apex are। त्रिशा जल्दी से बेटा। Undifferentiated. Undifferentiated stem cells, meristematic cells। Undifferentiated cells या unspecialized cells या stem cells, या प्लांट्स में हम इनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा द mesophyll cells of leaves which perform photosynthesis are Gunjan, Specialized cells. specialized cells। These are specialized cells or differentiated cells। The cells in the wounded region, the cells in the wounded region which helps in healing of injury are Atibha, De-differentiated. these are de-differentiated। बिल्कुल ठीक है, very good। De-differentiated cells। तो नाउ आई थिंक इन चीजों से आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएटेड सेल्स, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या है। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, आर यू डन विद दिस? Yes. रब कर दूं मैं इसको? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। लिखो अपनी कॉपी पे, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। बेटा हमारा, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, हमारा घर जो है एक बड़ा कंपार्टमेंट है,
उसके बाद देन रूम्स आर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, देन किचन इज वन कंपार्टमेंट। तो इसका क्या फंक्शन है? हमारे घर में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, क्या फंक्शन है कि एक की एक्टिविटी दूसरे की एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करती। वन एक्टिविटी ऑफ वन कंपार्टमेंट डज नॉट अफेक्ट या इंटरफेयर with the activity of another compartment. So this is division of labor. Division of labor helps in efficiency of the cell. किसी भी जगह की efficiency को बढ़ाता है division of labor. दूसरी चीज है, क्योंकि सेल एक कंपार्टमेंट की तरह से एक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है which is its boundary. It is selectively permeable. It does not allow the harmful substances to enter inside the cell. ठीक है। थर्ड थिंग, द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम, ये मैं लिखवाऊंगी, पहले समझना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल एज वेल एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. Further, different compartments in the cells in the form of various organelles also helps in division of labor inside the cell. Mitochondria is performing that is cell respiration, chloroplast is performing photosynthesis, ribosomes are doing protein synthesis. इस तरह से हर ऑर्गेनेली जो है एक कंपार्टमेंट है जो अपना अपना काम कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या फंक्शन है? डिवीजन ऑफ लेबर, सेपरेशन ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन to increase the efficiency of the cell. ठीक है जी. तो प्लांट सेल की अगर कंपार्टमेंट्स देखें तो हम क्या, ये हमने सबसे पहले जब हमने बायोलॉजी शुरू की थी तब भी हमने आपको बताया था. अगेन वही चीज मैं दोबारा से बता रही हूँ. द आउटरमोस्ट लेयर इज सेल वॉल एंड इनर टू सेल वॉल everything is protoplast. The outermost layer of protoplast is plasma membrane, and inside the plasma membrane is present protoplasm. Then protoplasm consists of nucleus. Nucleus is a protoplasmic structure. Fat vacuole and cytoplasm. The fluid portion of the cell, it is called as cytoplasm. Cytoplasm के में भी फर्दर जो सिर्फ फ्लूइड पोर्शन है, that is cell sac, या हम कहेंगे cytoplasmic matrix, not cell sac, cytoplasmic matrix. And in the cytoplasmic matrix, there are embedded cytoplasmic organelles. These cytoplasmic organelles, these may be double membraned, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, another is chloroplast. Then सिंगल मेम्ब्रेन, आपने पूरा लिख लें. सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है? विच इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस,
lysosomes, glyoxysomes, spirosomes. और हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज बेटा ऐसी भी है विच आर मेम्ब्रेनलेस, इनकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेलीज भी है। विच आर दीज ऑर्गेनेलीज? दीज आर राइबोसोम्स, centrioles, and another is nucleolus. These are membraneless structure. ठीक है, लिखो फिर फटाफट से ये। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, फंक्शंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखिए सेल इज ए कंपार्टमेंट, सेल इज ए कंपार्टमेंट which is separated from extracellular fluid by plasma membrane, it helps in maintaining, full stop करके, it helps in maintaining different composition of cytoplasm of the cell, different composition of cytoplasm of the cell and the extracellular fluid, due to which the two fluids, मतलब cytoplasm and extracellular fluid, the two fluids perform their specific function, ठीक है। सेकेंड आ जाइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग selectively permeable do not allow undesired substances to enter inside the cell, thus preventing the cell from damage. Third point, inside the cell also various structures are present, such as nucleus, mitochondria, etc. मतलब आपको पता ही है, which also are bounded by their own membranes,
own membrane and thus form separate compartments. This helps in division of labor. Which increases efficiency of the cell. Is it clear? पता चला बेटा? So these are the significance of compartmentalization. उसके बाद we have completed this topic. Then next topic, cell and open system. पहले समझो, ओपन सिस्टम वो है बेटा जहां पे देना और लेना चलता है. क्लोज्ड सिस्टम वो है कि ना मैंने तेरे से कुछ लेना ना मैंने तुझे कुछ देना. ठीक है, दैट इज क्लोज सिस्टम. बट सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम है. बाहर से अगर वो रॉ मटेरियल लेता है तो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है और दूसरे सेल्स को देता है, बाहर भी देता है. ठीक है, बाहर से अगर वो एनर्जी ले रहा है तो हीट की फॉर्म में वो बाहर लिबरेट भी कर रहा है. तो सेल इज एन ओपन सिस्टम. तो लिखो, एन ओपन सिस्टम इज दैट एन ओपन सिस्टम is that which is separated from its surroundings, by a boundary that allows exchange of substances, but substances और ब्रैकेट में लिख लो, matter and energy. Which exchange various substances, that allows the exchange of substances between the system and its surroundings. For example, plant cell obtain matter in form of minerals and water from environment. पहली चीज. दूसरा है plant cells obtain energy as light from environment. Plant cells gives prepared food to the nature या environment and liberates. क्योंकि बेटा जब भी रेस्पिरेशन करेगा तो एनर्जी, कुछ एनर्जी तो प्लांट सेल में जो है वो स्टोर हो जाएगी, बाकी की एनर्जी एज हीट लिबरेट हो जाएगी. एंड लिबरेट्स एनर्जी in the form of heat to the environment. Thus, the cell, ये plant cells है, इसी तरह animals भी है. Animals matter किस फॉर्म में लेते हैं? फूड की फॉर्म में लेते हैं. एनर्जी किस फॉर्म में? तो जो animal cells है, they obtain
food from the environment and they give, वो दे क्या रहे हैं, they give heat to the environment, और दूसरा after their death they give matter to the environment also. ठीक है? So the cells, they act as open system. They exchange both matter and energy with the environment. लिखो ये. एनिमल सेल्स, मैटर एक तो डेथ के बाद है, उसके बाद एनिमल सेल्स जो है हम थोड़ा सा यहाँ लिख भी लें. एनिमल सेल्स receive variety of food as matter and energy. Gives matter as excretory matter. Excretory matter बाहर निकालते हैं, and heat as energy. The animal cells. Thus, the cells act as the open system. लिखो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल साइज एंड शेप. थर्ड टॉपिक है हमारा सेल साइज एंड शेप. जो स्मॉलेस्ट सेल है इन नेचर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, इन जनरल द स्मॉलेस्ट सेल है वो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा. ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक ये लिख लो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जब हम मोनरा करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे. दिस इज स्मॉलेस्ट सेल एंड साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. micrometer in length. Largest isolated, अलग किसी के साथ नहीं मिला हुआ है, isolated single cell. It is egg of ostrich. Ostrich is a bird. तो हम जनरली कह देते हैं एवियन एग्स. एवियन होते हैं बर्ड्स, है ना. एव्स, एव्स आर बर्ड्स. एवियन एग्स आर लार्जेस्ट. एवियन एग्स सबसे बड़े होते हैं. तो एव्स में भी सबसे बड़ा किसका है, ऑस्ट्रिच का है. बैक्टीरियल साइज, बैक्टीरिया के सेल का साइज कितना होता है इन जनरल, अगर हम माइकोप्लाज्मा के कंपैरिजन में देखें तो 3 to 7 माइक्रोमीटर इन विड्थ, या इन डायामीटर आप कहने तो ज्यादा ठीक है. विड्थ भी वही चीज है, इतना होता है. उसके बाद smallest cells in humans, that are RBCs. Smallest cells. बेटा हम प्लेटलेट्स को क्यों नहीं कहते, वो भी तो छोटे से हैं, वो इनसे भी छोटे हैं, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स है सेल्स की, वो सेल्स नहीं है एक्चुअली में. तो आरबीसीज तो एक प्रॉपर सेल्स है. तो आरबीसीज आर मोस्ट या लीस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन. लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमंस या वर्टिब्रेट्स, these are nerve cells. Longest cells in vertebrates, these are nerve cells.
और अगर आरबीसी का देखा जाए तो इसका साइज है 7.0 मतलब 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना, बैक्टीरियल सेल अगर ये है, ये बेटा ये लेंथ है बेटा 3 to 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये ठीक कर। ठीक है जी, डन करें आगे। यस मैम। चलिए, ये तो था साइज, उसके बाद है शेप, शेप ऑफ सेल्स। बाइकनकेव शेप या डिस्क शेप, बाइकनकेव और डिस्क शेप आरबीसी। irregular amoeboid shape, irregular amoeboid shape, it is WBCs. Then elongated, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करें, elongated cells, these are tracheates. Spindle shaped, smooth muscle fibers. Elongated branched, elongated branched cells. These are nerve cells. Kidney shaped cells. Kidney shaped cells, these are mast cells. Round and oval. Round and oval. Mesophyll cells of leaves. Round and oval. Mesophyll cells of the leaves. Elongated and narrow. Elongated and narrow. Columnar epithelium. Elongated and narrow cells. Columnar epithelium. These are the different shapes of the cell. ठीक है बच्चों, बना लिया आपने? यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा
प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, कैरियन मतलब न्यूक्लियस जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो लिखो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स having false nucleus, having false nucleus called as nucleoid, nucleoid, nucleoid or genophore, nucleoid or genophore. Prokaryotic cells includes या prokaryotes, nucleoid or nucleoid और genophore, genophore, ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स, इनमें प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स है बेटा? इट इंक्लूड्स, एक आपको सबको पता है बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया। दूसरा आ जाता है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BGA भी कह देते हैं, और इट्स अनदर नेम इज cyanobacteria. Then it includes mycoplasma. इसी का ही दूसरा नाम है, कई जगह आपकी बुक में बेटा माइकोप्लाज्मा एंड PPLO लिखा हुआ है कुछ NCERT से, बट वो ठीक नहीं है, माइकोप्लाज्मा और PPLO, बिकॉज दीज आर वन एंड द सेम थिंग। PPLO की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो pneumonia like organisms, प्लूरो pneumonia like organism। और फोर्थ आ जाते हैं बेटा अनदर कैटेगरी, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। और हमने बेटा इस चैप्टर में मेनली किसको कंसीडर करना है? बैक्टीरिया को। अगर हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर करना है तो वी विल डू विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया, बाकी तीनों को हम बाद में कंसीडर करेंगे किंगडम मोनोरा में, ठीक है। इस चैप्टर में वी विल डील विद बैक्टीरिया, राइट। तो अब हम आगे आ जाते हैं बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं, बट मेनली बैक्टीरियल सेल, ठीक है जी। और यहाँ पे बैक्टीरियल सेल से पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, स्मॉलर देन eukaryotic cells, and prokaryotic cells divide faster as compared to eukaryotic cells, as compared to eukaryotic cells। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, we will do later on, बट ये दो तो मेन है इस स्टेज में। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। पहले बिल्कुल पेन नीचे रखो, देखो और फिर लिखना। बैक्टीरियल सेल की शेप कैसी हो सकती है? इट इज स्फेरिकल, जिसको हम कह सकते हैं कोकस।
और जो कोकस है अगर सिंगल स्फीयर है तो इसको हमने कहा मोनोकोकस। अगर बैक्टीरिया में दो स्फीयर्स है तो उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे डिप्लोकोकस। जैसे अभी आगे चल के आप और भी बहुत कुछ करेंगे, अभी सिर्फ मतलब मैं बता रही हूँ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, उसमें वो जो बैक्टीरिया है निमोनिया का उसमें दो कोकाई है। अनदर इज चेन ऑफ सफेरी स्फीयर्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। अगर if cocci forms a bunch, then it is called as staphylococcus. ठीक है जी, मोनोकोकस means single coccus, bacteria has single sphere. If bacteria has two spheres, diplococcus bacteria. If the bacteria has chain of cocci या spheres, then it is called as streptococcus bacteria. And if it has bunch of cocci spheres, then it is staphylococcus bacteria. The second one is, second shape आ जाती है rod shaped या बेसिलस। रॉड शेप्ड या बेसिलस, यहाँ पे देखो उसी तरह से सिंगल रॉड शेप्ड मोनोबैसिलस, दिस इज डिप्लोबैसिलस। आप खुद लिखना, टू रॉड्स। This is Streptobacillus. This is Palisade bacillus. This is Palisade bacillus. Then the third one, थोड़ा सा मैं इधर को बता देती हूँ, it is Spirillum. Spirillum means spiral shaped bacteria. This is spiral shaped bacteria having single flagella. इनमें भी हो सकते हैं बट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्पाइरलम में हमेशा एक होगा। Another is Vibrio. Vibrio का मतलब ही क्या होता है? Comma shaped bacteria. It is comma shaped bacteria. Comma नहीं होता, हम ऐसे करके comma लगाते हैं, तो it is comma shaped bacteria. एक हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, एक मिनट, एक सेकंड। Vibrio has
single flagella. Spirillum has many flagella. ये करो ठीक. Spirillum many flagella. Vibrio single flagella. Comma shaped bacteria. So these are shapes of the bacterial cell. Coccus means spherical. Bacillus मतलब rod shape. Spirillum मतलब spiral shape. Vibrio मतलब comma shape. एग्जाम्पल्स मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ. डिप्लोकोकस, वन इज डिप्लोकोकस न्यूमोनिया. दिस इज कोकस बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है. अनदर इज बैसिलस में हम बैसिलस में एग्जाम्पल इज आइचर्शिया कोलाई. ई कोलाई हम कॉमनली बोल देते हैं. इट इज बैसिलस बैक्टीरिया. स्पाइरलम की एग्जाम्पल है स्पाइरलम वोल्यूटेंस, एंड विब्रियो की एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा, जो कॉलरा डिजीज करता है. इट इज कॉलरा, इट कॉजेस कॉलरा. Is it okay? This is shape of the bacteria. कर ली एग्जाम्पल्स, लिख ली बेटा. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू योर नीट एग्जाम. +1 में किसी ने नहीं पूछनी ये एग्जाम्पल, बट नीट के लिए ये जरूरी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. हमने देखा कि यहाँ पे सिंगल फ्लैजेला है, यहाँ पे एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला है. तो देयर कैन बी different arrangements of flagella. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मोटिलिटी इन बैक्टीरिया. नेक्स्ट है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया. ये भी रख कर दूं बेटा, ये भी लिख लिया आपने सबने. Yes, ma'am. तो इसमें लिखिए बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल बैक्टीरिया है फ्लैजेला. इसी के अंदर लिखो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन arrangement of flagella. Based on arrangement of flagella. सबसे पहले आ जाता है कोई फ्लैजेला नहीं है, एट्राइकस बैक्टीरिया या एट्राइकस अरेंजमेंट. नो फ्लैजेला. सिंगल फ्लैजेला एट वन एंड.
monotrichous. Then one flagella at each end. Amphitrichous. One flagella at each end. Amphitrichous. Tuft of flagella at one end. Lophotrichous. Two bunches of flagella at both ends. Cephalotrichous. And flagella all over the surface. It is peritrichous. These are the different types of bacteria based on the arrangement of flagella. Flagella gives motility to the bacteria. करें बेटा आगे. Yes, ma'am. उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, हमने ये फ्लैजेला की बात की. फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, बट स्ट्रक्चर क्या है इस फ्लैजेला का? ये देखिए, ये लेटस से ये बैक्टीरिया है. थोड़ा सा मैं और मैग्नीफाई कर रही हूँ. ये इसकी सेल वॉल है. दिस इज सेल वॉल. और इसके अंदर क्या होती है बेटा? ये है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो फ्लैजेला है बेटा, लेट अस से यहाँ पे एक फ्लैजेला पड़ा है, उसका ये एक बेसल बॉडी है. दिस इज बेसल बॉडी. बेसल बॉडी में बेटा ये रिंग्स है. दीज आर रिंग्स इन द बेसल बॉडी. उसके बाद
ये जो कर्व्ड है ये मैं बहुत आपको मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ बेटा। ये अगर बेसल बॉडी है तो ये बाहर हुक है, दिस इज कॉल्ड एज हुक। और ये जो है ये इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, है ना, लंबा सा। तो ये दिस वन जो सिलेंड्रिकल है ये है बेसल बॉडी, दिस इज हुक, दिस इज फिलामेंट। ठीक है, जो बेटा बेसल बॉडी है आप देख रहे हो, इट इज एम्बेडेड, इट इज ए स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज एम्बेडेड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स, इट इज एम्बेडेड इन द ग्लाइकोकेलेक्स एंड इट हैज रिंग्स, जिसमें बेटा ये पूरा फिलामेंट इन रिंग्स में, ये रिंग्स क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके घूमते हैं एंड दे हेल्प्स इन रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला। हुक जो है it is a connecting structure only, it connects filament with the basal body। तो बेसल बॉडी की रोटेशनल मूवमेंट वो फ्लैजेला को या फिलामेंट को पास करता है। एंड फिलामेंट इज थ्रेड लाइक लॉन्ग, जो हमें बाहर नजर आता है एक्चुअल में वो हमें फिलामेंट नजर आता है, विच रोटेट्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो लिखो, ये पहले बना लो, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको, आई होप ये अब आपको नजर आएगा। So write down, bacterial flagella has 3 parts. Bacterial flagella has 3 parts: basal body, hook and filament. Basal body, hook and filament. इसमें फर्स्ट पार्ट लिखिए बेसल बॉडी। Basal body has a rod shaped structure. Has a rod shaped structure, comma, embedded in the glycocalyx. Embedded in the glycocalyx. And is surrounded by one pair of rings in, अभी हम ये करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया and 2 pairs of rings in gram नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अभी हम करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। 1 pair of rings in gram positive bacteria and 2 pairs of rings in gram negative bacteria. Next point आ जाइए, the hook is the curved part of flagella and it connects basal body with the filament, and it connects basal body with the filament. Third point, filament. Filament is the long thread-like structure. Filament is the long thread-like structure. It is formed of protein flagellin. It is formed of protein
flagellum. It performs rotational movements. It performs rotational movements with the help of rings. With the help of rings, ब्रैकेट में लिख लो corkscrew type movements, corkscrew like movement. Full stop करके movement of bacterial flagella, movement of bacterial flagella pushes the water backward, pushes the water backward and bacteria forward. Water पीछे जाएगा तो bacteria आगे जाएगा and bacteria forward. ठीक है जी. So this is about bacterial flagella. Next हम आ जाते हैं बेटा structure of bacterial cell. Structure of bacterial cell. तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे बेटा it is cell envelope. Cell envelope में क्या है बच्चे? ध्यान से देखो, it is 3 layered. Outermost glycocalyx. Then inner to glycocalyx is present cell wall. And inner to cell wall is present plasma membrane. जो बेटा ग्लाइकोकेलेक्स है, ये क्या है? जैसे हम कहते हैं म्यूसिलेज है, सबसे बाहर म्यूसिलेज लेयर है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बैक्टीरिया का पार्ट है, बट उसके ऊपर जैसे हम लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमने इसके ऊपर ये कपड़े डाल दिए, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स. बट कपड़े तो हमने बाद में सिलवाया, बॉडी के साथ तो आए नहीं, बट बैक्टीरिया के साथ ही ग्लाइकोकेलेक्स भी आता है. बट बैक्टीरिया ग्लाइकोकेलेक्स के बगैर रह सकता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर नहीं रह सकता, बट ग्लाइकोकेलेक्स के बगैर रह सकता है. ठीक है, तो ग्लाइकोकेलेक्स पहले ध्यान से समझेंगे फिर लिखेंगे. ग्लाइकोकेलेक्स जो है इट इज sticky mucilage. अगर ये लूज है then it is called as slime. अगर ये compact है then it is called as capsule. Not essential for survival of bacteria. पर फिर भी कुछ तो फंक्शंस होंगे. फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन, बाहर के केमिकल से प्रोटेक्ट कर रहा है. Another is provides virulence. Virulence का मतलब होता है ability to infect. It provides ability to infect.
जो होस्ट सेल्स है उनको इन्फेक्ट करने की एबिलिटी देता है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड है, gives shape and obviously protection also. Formed of म्यूरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर बेटा इसका एक और नाम है म्यूकोपेप्टाइड। It is also called as mucopeptide. ठीक है, it is single layered in gram positive bacteria and it is two layered in gram negative bacteria. और जो टू लेयर्ड है बेटा थोड़ा सा अलग है क्या, कि इसमें आउटर लेयर ऑफ लिपिड्स एंड इनर लेयर ऑफ म्यूरिन है। आउटर लेयर ऑफ लिपिड्स एंड inner layer of murin. Is it okay? ठीक है जी बच्चे। तो अब यहाँ पे हम सेल वॉल के अंदर ही लिखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम अलग से करेंगे क्योंकि डिटेल स्ट्रक्चर आ जाता है, बट सेल वॉल based on cell wall composition and staining ability for gram stain. There are, मैंने अभी बताया, two types of bacteria. कौन से? ग्राम पॉजिटिव और दूसरे है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यही करना है, यहां तक किया है। आप देखो जो डाउट्स है वो आप मेरे से पूछिए।